Hello, good afternoon, everyone. In today's session, we will see part 4 of Unit 9, where we will discuss figure of speech and literary terms. Okay, figure of speech and literary terms we will see in this session. Already, I have covered all the topics of Unit 9. Okay, this is the last topic which is left, and in this session only I am going to complete the whole unit 9. So here our unit 9 will be over. Okay, so this is very important topic. That is the reason why there is a specific video on this particular topic. ओके मुझे लगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरव्यू में भी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं अभी 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो कि फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के ऊपर बेस्ड थे। ओके सो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना फिगर ऑफ स्पीच। ओके तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो figure of speech are the stylistic device used in writing and speech to make language more expressive, vivid and impactful. They add depth and creativity to the language. Okay, so this is the definition of the figure of speech, where to show our creativeness we use figure of speech. ओके अगर कोई भी आम भाषा में लिख सकता है, कोई भी व्यक्ति है वो आम भाषा में लिख सकता है, बट आप देख सकते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच है ये केवल जो अच्छे राइटर्स हैं ओके वही कर पाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आप किसी भी पोएम को लिख रहे हैं। इट्स अ रियली वेरी एसेंशियल components of a poetry. We should know, as a student of English literature, we should know what is figure of speech and how to use him. Okay, we can be more expressive, vivid as well as impactful. If you want your writing so impactful, then you should know the figure of speech. That is the reason why we have figure of speech. So without any wasting of time, let's move further. I have mentioned most of the important figure of speech. There are huge number of figure of speech. Okay, but here in this session I will cover only the important one that is going to be asked in your assistant professor examination, or it is really very helpful for if you are someone who is preparing for the NET SET examination, as well as if you are a student of English literature. Okay, so first of all we have simile. Okay, then first of all let's see what is the definition of simile. It is a comparison between two unlike things using like or as. आप किसी भी दो चीज़ों का एक्सप्रेशन, आप किसी भी कोई दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं इस वर्ड के जरिए like और as के जरिए, then it is called as simile. एग्जाम्पल देखते हैं, she was as fast as cheetah. Okay, she, it's a human being. Okay, human, as fast as cheetah. cheetah is animal, बट चीता हमें पता है सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है, और हमने इसका कंपेयर किया शी वॉज फास्ट एज अ चीता. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी another example. my friend dance like Michael Jackson. Michael Jackson is another person and I am comparing my friend with him. Okay, my friend dance like Michael Jackson. It is another example of simile. Okay, it's really very easy. Okay, now let's see another figure of speech, that is metaphor. Metaphor क्या है? A direct comparison between two unlike things without using like or as. सिमिली में हम यूज कर रहे थे लाइक और एज, और यहाँ पे अब इस दो अनलाइक थिंग्स. ओके, यहाँ पे भी हमें अनलाइक ही थिंग्स है, यहाँ पे भी अनलाइक ही थिंग्स है, बट अब हम यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम इज अ थीप. ओके, माई डॉटर इज एंजल. माई डॉटर इज एन angel.
एंजल का कंपेयर कर रहे हैं डॉटर के साथ, देन व्हाट वी आर यूजिंग मेटाफर. आई होप आई एम क्लियर टू यू. Very easy. Now let's see our third one. Third figure of speech is personification. What is personification? Personification, giving human qualities to the non-human things. देखिए, human things होती हैं, जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती हैं, but there are some non human things. Okay, एक example से समझते हैं. The wind whispered through the trees. अब whispered है मतलब कुछ कहना, कुछ भुनभुनाना. अब ये इंसान करता है, चिड़ियाँ करती है, लिविंग थिंग्स जो होता है वो करते हैं. क्या हवा बातें कर सकती है क्या पेड़ से? नहीं कर सकती है. What we are using personification. Most of the writers have personified the nature. Most of them belongs to romantic age. there are William Wordsworth और भी मेजर राइटर्स जो रोमांटिक एज और भी बहुत सारे एजेस में बिलोंग्स करते हैं. दे पर्सोनिफाई थिंग्स. metaphysical poetry is also there, where there is so much personification you will find in their poetries. Okay, it's not so much difficult. Okay, so we giving human qualities to non-human things it is known as personification. Now let's see another figure of speech, that is hyperbole और exaggeration. ओके, हाइपरबोल का एक एग्जांपल लेते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एक्सट्रीम एक्सजरेशन फॉर एम्फेसिस. व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? एग्जांपल के जरिए समझते हैं. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. मैंने तुमसे हजारों बार बोला है. व्हाट आई एम यूजिंग हाइपरबोल. आप तो भी नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट. ओके, it is hyperbole. आप एक ही I have told you a million times, okay, is an example of hyperbole. It's also so much easy. Now let's see another figure of speech, that is alliteration. Alliteration is also told the, see there are tongue twister. Tongue twisters are there. I am pronouncing one tongue twister for you. Okay, if two witches were watching two watches, which would watch which watch? Another example, if you wanna buy, if you don't wanna buy, bye. Okay, what these two are known as tongue twister, and tongue twister is known as the mother of alliteration. Repeating of sound, it is known as alliteration. Sound is repeating. Okay, let's see. सबसे पहले हम देखते हैं एक डेफिनेशन. द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड, इट इज नोन एज अलिटरेशंस. एक एग्जांपल लेते हैं अलिटरेशन का. पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. यू नो दिस इज अलिटरेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पी वर्ड है, पी कितनी सारे बार रिपीट्स हो रहा है. ओके, 6 टाइम्स. इट इज रिपीटिंग 6 टाइम्स. पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिक्ड पेपर्स. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलिटरेशंस. नाउ वी विल हैव अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज एजोनेंस. व्हाट इज दिस एजोनेंस? एजोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स विद इन द वर्ड्स. वहां पे आप देख सकते थे अलिटरेशंस में केवल P is not a vowel, correct, but it is repeating. That is the reason why it is alliterations. But if vowel sound is repeating, then it is known as assonance. Let's see an example. The rain in Spain stays mainly in the plain. What we have observed in this line? The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain. You can see here the vowel A stays mainly in a plain. This vowel is repeating so many times, that is the reason it is known as the assonance. I hope it's not so difficult to understand figure of speech, but most of the teacher make it so complicated that a student cannot understand what is this, and they still face a lot of challenges while understand the figure of speech. But if you are in my class, so you have to don't worry about anything. Okay, I have
मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया है सारे टर्म्स को और एक एक एग्जाम्पल भी दे दिए हैं आपको। अब कभी भी फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब हम देखते हैं अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच, डेट इज कॉन्सोनेंस। अब एजोनेंस में देखा कि वोबल साउंड रिपीट हो रहा है, अब कॉन्सोनेंस में क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन द वर्ड्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वोबल अब यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, इट्स अपोजिट ऑफ एजोनेंस। ओके, पिटर पैटर पिटर पॉटर, पिटर पैटर पिटर पैटर, पी 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 पी, this sound is repeating, pitter patter pitter patter. So this is consonance, opposite of anonance, annosense. Okay, this is another figure of speech which is very very important. Then we have another figure of speech, onomatopoeia. Onomatopoeia, what is it? It is a word that imitates the sound it's repeat. जो अब साउंड रिपीट हो रहा है ना, इसी को इमिटेट करेगा और ज़्यादा उसी चीज़ को। एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं, द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स, बीज बज्ड, बीज बज्ड। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज ओनोमेटोपिया। ओके, बीज बज्ड। Okay, this is the where you can simply says that how easy it is. Figure of speech, most of the student thinks that it's really very they make them so much complicated, figure of speech, but it's really very easy. Just have an example and have a very short definition. A word that imitates the sound it repeats. The bees buzzed around the flower. It's really very simple and really very easy. Am I correct? Yes. Okay, let's see another example or another figure of speech. Another figure of speech is oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron की definition है, a phrase that combines contradictory words. If you find some contradictory words in a single line, that is considered to be as oxymoron. Oxymoron. Let's have an example of oxymoron. Bittersweet, defending silence. How it is possible? अगर कोई चीज मीठी है तो वो कड़वी कैसे हो सकती है? I am not understanding. What is this? And if there is in silence, deaf, deaf मतलब बहरा, बहरापन और एक silence है. Obviously, these are contradictory words. And if you seen these things in any poems or anywhere, then understand that it is oxymoron. You just have to आप एक काम करिए, आप जो भी मैंने एक लाइन में सिंपल सा डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, आप इसको बस याद कर लीजिए. आपको फिगर ऑफ स्पीच में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. इट्स माई श्योरिटी टू यू. wherever you are in your interview or wherever you are giving the examination related to figure of speech, if you know these definition and these examples, then be sure that you are going to crack that particular examination or particular questions. Okay. This is all about oxymoron. I hope you are getting all the points which I am telling you. If you have any doubts, you can ask me in the comment box. I am able to see your comments right now. Okay. Now let's move to the another figure of speech, that is paradox. Now what is this paradox? Paradox, a statement that seems contradictory but reveals a truth. See, oxymoron, a phrase that combines contradictory words, but here we are not getting the truth. सच्चाई पता नहीं चल रही है, but we are getting the truth in paradox. Now let's see an example. Less is more. अगर आपको less is more, what is this? एक truth है, थोड़ा सा पाओ मगर अच्छा पाओ. अगर आपके पास बहुत थोड़ा सा है, you have very less quantity of quality life, you have very less quality of life, that is sufficient for you. Correct. And it's a truth of life. What is it? It is truth of life. If you have quality life but you are getting so much less, but it's sufficient, then it's okay. And what this figure of speech is? This figure of speech is paradox. Okay. Now let's move further to the another figure of speech. Another figure of speech is pun. What is pun? Pun. Definition देखते हैं. A play on words with double meanings. There is double, wherever you find the double meanings, then it is pun. We in the modern world, हम कितनी सारी आप Instagram पे reels देखते हैं, सब double meaning बातें होती हैं. What they are using? They are using pun.
So let's have an example of pun. I used to be a baker but I couldn't make enough dough. ओके ये एक मैंने ताना टाइप उसे कसा. आई यूज टू बी अ बेकर. मैं अगर इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप केक बनाना जानते हैं और आप कहीं से केक खरीद के लाए बट आपको मज़ा नहीं आया, पसंद नहीं आया, आप क्या बोलेंगे? इससे अच्छा तो केक मैं ही बना लेता. व्हाट यू डिड अ पन. हियर इज द सेम एग्जांपल. आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डो. एक तरीके की यू कैन से दैट डो. व्हाट इज डो? डो इज okay, I hope I am able to clear you what does this mean, what does this sentences mean. Now let's see another example or figure of speech. It's irony. आपने बहुत लंबे समय से देखा होगा, विलियम शेक्सपियर also use irony so many times in his plays. Okay, there are several plays and several prose writings. Every work, wherever you see, if you are reading any particular literature book, you found so much irony in that particular book. So let's see the definition of irony. First of all, what is irony? Saying something but meaning the opposite. Situational, verbal and dramatic irony. Okay, अगर इसमें बात करें irony की भी, तो irony की 3 टाइप्स होती हैं: situational irony, verbal irony और dramatic irony. Okay, एक एग्जांपल लेते हैं. A traffic jam on your way to a driving test. It's an irony. आपने कहीं से कार चलाना सीखी है, आपको अच्छे से कार आती है, बट आपका टेस्ट कहाँ पे हो रहा है? ट्रैफिक जाम में. इट्स एन आयरनी. इट्स एन एग्जांपल ऑफ आयरनी. ओके, नाउ लेट्स हैव एन अनदर एग्जांपल एंड अनदर फिगर ऑफ स्पीच. synecdoche. Okay, synecdoche. What is synecdoche? Using a part to represent the whole or vice versa. It's synecdoche. ये आपको सेट का अगर आपने पेपर देखा होगा तो एक वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर synecdoche. Okay, most of you have marked it very wrong. I'm so upset that you are not aware of my videos right now which you are watching, so that you may be mark the correct options. But what can we do now? So what can we do now? It is which figure of speech? You have to tell me in the comment section. Now let's have an example. All hands on the deck. Hands is equal to sailors. All hands on the deck. See, जब एक boat होती है एक, okay, for example this is the boat, then this is deck. All hands on the deck. यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आदमी हैं सब इस नाव को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं. What it is represent whole part, and that is the reason this boat is the example of whole part. और ये किसका होल पार्ट है? यहाँ पे जो भी लोग हैं डेक पे, डेट इज कॉल्ड. सो ऑल हैंड्स ऑन द डेक. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड synecdoche. ओके, part to represent the whole or vice versa. If you want so many examples, you can Google it. There are so many examples of these, and if you are going through all these examples, then you will be able to clear this thing more deeply. So I want not a very much bigger videos. Already it's 20 minutes approx. If I going through lots of examples, then the video will be long, and I don't want that. That is the reason I am giving you only just one example. If you are someone who are really interested and you want some more examples, you want to write it down in your notebooks, then you can do it. It will really very helpful for you. But for now we have only one example and one definition for all the figure of speech that is really very important from the exam point of view. Okay, so now without wasting any time, we will move further and we will see another figure of speech, that is metonymy. Metonymy. What is metonymy? So metonymy is the replacing a word with the something closely associated with. Replacing a word with something that is closely associated with it. Okay, example देखते हैं. The White House issued a statement. White House is equal to the USA President government. So see, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपको कोई वर्ड मिलता है जहाँ पे आपको जो प्रेसिडेंट, जो व्हाइट हाउस है ना अमेरिका में, यूएसए में, इसको आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, बट आपको इतना ही बताया जाता है, द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट. सो व्हाइट हाउस में कौन रहता है यूएसए का?
प्रेसिडेंट रहता है, करेक्ट, तो आपको मिल जाता है एक आइडिया. ओके, सो द प्रेसिडेंट हैव इशूड अ स्टेटमेंट. यहाँ पे क्लियरली द व्हाइट हाउस से आपको ये नहीं बताया था प्रेसिडेंट हैव यूज द स्टेटमेंट, बट आपको व्हाइट हाउस द यूएस प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपको इनडायरेक्टली बताया. अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन इट इज मेटोनोमी. ओके. Okay, now let's move further to the another figure of speech, that is astrophe. It's our last figure of speech. Okay, it's speech just wait for a minute.